Assalamu alaikum guys, this is Jamshaid Raza and you're watching my YouTube channel JR the Versatile. Today in this video, I'll show you how to create Laurel Wreath design in Adobe Illustrator. जी आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम Laurel Wreath का डिज़ाइन Adobe Illustrator के अंदर क्रिएट कर सकते हैं. So without further ado, let's get started. First of all, open your Adobe Illustrator and create a document of any size you want. मैं अपने Illustrator में 4000 pixels by 4000 pixels का एक document ले रहा हूँ. By using ellipse tool, draw two circles and overlap them like this. Then use shape builder tool to create a leaf. अब हम ellipse tool का इस्तेमाल करते हुए दो सर्कल ड्रा करेंगे और इन दोनों को ओवरलैप करके शेप बिल्डर की मदद से एक लीफ बनाएंगे. Take a copy of this shape, fill it with white and adjust it to the bottom. इस शेप की एक कॉपी लेंगे, उसमें वाइट फिल ऐड करेंगे और स्केल डाउन करके पीछे वाली शेप के बॉटम के साथ एडजस्ट कर देंगे. Select both shapes and delete white area of this shape by using shape builder tool. अब दोनों शेप को सिलेक्ट करें और शेप बिल्डर का इस्तेमाल करते हुए वाइट वाले एरिया रिमूव कर दें. As you can see, our one leaf is ready. Now tilt this shape at the angle of 49 or 48. अब इस शेप को 48 या 49 के एंगल पर थोड़ा सा मूव करेंगे. Now select this shape and take a copy of its reflection. अब इस शेप को सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में जाएं और वहां पर रिफ्लेक्ट करके एक कॉपी ले लें. Keep the shape selected and go to Effect menu and open Transform panel. शेप को सिलेक्ट करके इफ़ेक्ट के मेन्यू में जाकर डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म के मेन्यू में ट्रांसफॉर्म वाले पैनल को ओपन कर लें. Move your subject vertically upward by adding negative value. इस सब्जेक्ट को ऊपर की तरफ मूव करने के लिए वर्टिकल स्लाइडर में नेगेटिव वैल्यू ऐड करेंगे. Make sure preview button is checked so that you can see what's going on. Now take 12 copies and adjust their size by using scale slider vertically and horizontally. अब इसकी 12 कॉपीज़ लें और इसका साइज़ एडजस्ट करने के लिए स्केल स्लाइडर यूज़ करें. Now take a copy of this leaf and adjust it to the top of this design. Now draw a line and keep its stroke weight according to the leaf shapes. अब एक लाइन ड्रॉ करें और इसकी स्ट्रोक का वेट लीफ की शेप के मुताबिक एडजस्ट करें. Now expand these shapes and align them vertically. अब इन सब शेप्स को एक्सपेंड करके वर्टिकली अलाइन कर देंगे. Open brush panel from here and go to window menu and find brushes. अगर आपको बाई ब्रशेस का पैनल नहीं मिल रहा तो विंडो के मेन्यू में जाकर ब्रशेस वाला ऑप्शन ऑन कर लें. Now drag this design to brush panel to create a brush. अब इस डिज़ाइन का ब्रश बनाने के लिए इस डिज़ाइन को ब्रश पैनल में ड्रैग करें. Now press B and select our created brush and draw any stylish line. As you can see, it's beautifully working. Let's create a Laurel Wreath. Now draw a half circle with stroke and apply this brush effect. अब एक हाफ सर्कल ड्रॉ करके उसके ऊपर ये ब्रश इफेक्ट अप्लाई करें. As you can see, it looks awesome. Thank you so much guys to watch this video. I hope you have learned something from this video. If you have any query in your mind regarding this topic, you can ask me via comment section. So don't forget to subscribe, like and share.